Hi everyone, my name is Akshay and I'm part of a SevenMentor as a data and business analytics trainer. So we gonna learn related to the advanced Excel. So let's begin with the advanced Excel and I'll tell you each and everything related to the Excel and how it can be useful in real world. So let's start with the Excel part. So first of all, today we'll start with the Excel part, okay, and I'll tell you each and everything about the Excel. So first I'll tell you about the basic thing about the Excel, what is the Excel and why it is used in real world. So we'll learn about the Excel part. Okay, so here it is like what is the Excel. Okay, so everyone know like Excel is nothing but it is powerful and widely used spreadsheet application which is developed by Microsoft. Okay, so Excel is a part of Microsoft Office suite and is available for Windows, Mac, iOS and Android platforms. Excel is designed to organize, analyze and manipulate the data using rows and columns in a grid-like structure. Now grid-like structure means what? Then nothing but like the data is always stored in the form of rows and columns. Okay, that is called a grid-like structure. Okay, so here if you see, this is nothing but interface of Excel, like how the interface is there for the Excel. Okay, so you can see at the top, this is called a quick access toolbar. Okay, which is used to do the basic things which is we are using day-to-day life. Okay, then there is one option called name box. Okay, so name box is always giving you the values where the cell is located. Okay, now cell is nothing but a rectangular box which is there in an Excel sheet. Okay, next we have a ribbon. So ribbon is nothing but in the ribbon you'll get all the options which will be useful to do the data analysis, data cleaning and all these things. Okay, next we have formula bar. Okay, now what is this formula bar? Okay, so whenever we write any formula, okay, and it will start reflecting into the formula bar so that it will easy to write the formula according to the syntax. Next, if you see, this all are the column numbers. Okay, now what is this column numbers? Column numbers are nothing but it will give the information that the characters data is always a columns. Okay, and the numerical values are always a row. Okay, this means rows are always a number and characters are always a column. Okay, at the last if you see worksheet tab. Now what is this worksheet tab? So worksheet tab is nothing but whenever you open any Excel file, by default one sheet is open. Okay, so this is nothing but whenever like if you see in this Excel we can add multiple sheets at a time. Okay, so there is not compulsory you have to work only on one single sheet, you can add multiple sheets at a time. So this is nothing but this is a interface of a Excel. Now we'll move on with the some extra features of the Excel. Okay, so here if you see, users can protect the sheets, workbooks with passwords to control access, prevent unauthorized changes. It is very important in real world. Why? Because whenever you are working with any data set, okay, and if you want to share the data set with the client side or if you want to share with your team members and if you want to add any password, okay, if that is a confidential data and if you want to add the password, so that also features we can do in Excel. Okay, now using the Excel we can provide the unauthorized changes also. Okay, we can hide and unhide the cells of the sheets. Okay, the data which is not required to the client and okay, or as if your team member if they don't want to see the data, then we can hide and unhide the cells as well as the sheets also. Okay, then if you see at the last, they have told that Excel supports various data types including text, numbers, integers, decimals, dates, times and boolean values like true and false. Okay, so if you want, I'll show you that also. Okay, so let's see, this is a cell. Okay, in this you can add a numbers, you can add a number, okay, or else you can add a text, okay, or else you can add boolean values, okay, or else you can add the characters also. Like if you see, we can add @ hashtag, dollars, %, any symbol you can add, it will accept. So this is one best feature of Excel, that you can add any type of data type, it will be accepted. Now next is nothing but conclusion. Now here what you are able to see, that Excel is called a versatile tool for data management, analysis and visualization. Now you'll be thinking, what is this data management, analysis, okay, visualization, what is this versatile? Okay, so versatile is nothing but versatile means a special tool which is used to do in all activities, which is useful in all activities like data management. For the data management we are using Excel, for doing the analysis we are using Excel, for creating the visuals we are using Excel. Okay, so it is widely used in various industries including IT, finance, marketing and more. Okay, so by learning Excel features and functionalities, you can enhance your data handling capabilities and improve decision making
process. So this is very important, because if you learn the Excel, it will be helpful for you to take the business decision, or as in future if you want to open your own business, or if you are working with the client, at that time also it will be very helpful to take a business decision, and according to that you can increase the business, or you can take a specific decision related to the Excel data. So this was just the basic part of the Excel. Okay. Now we'll move on with some of the functions which is very useful in day-to-day life whenever you face this type of issues. I'll tell you, I have some data with us, and also I'll tell you some more extra functions. Okay. So first are the nothing but key functions in Excel. Okay. Now we'll be learning what are the key functions of Excel. Okay. So first is nothing but logical functions. Very interesting concept, logical functions. Now what is this logical functions? Logical functions will always check the condition in the form of true and false. Okay. So logical functions use decision making formulas. So using this we can take a specific decision. Okay. And when you take the decision, according to that you can do the another things which is related to the business. Key for data validation and automation and analysis. Okay. So logical function are data used for data validation, for doing automation, and for doing data analytics. They check a condition and return result such as true or false, or a custom output. Means they always give the values in the form of true and false, or else if you want your own output, that also they can give. Okay. They value whether something is correct or not. Okay. So example, is the score above 40? Is the sales amount greater than target? This type of question or this type of scenarios come in real world time. Okay. At the time, what you can do? You can just apply some logical functions, and then you can give the answers or give the solution to the specific task. Now next, I'll just tell you some logical functions. So first is nothing but if function, and function, or function, not function, and ifs function. Okay. So I'll just explain you one by one all these things. Okay. So first is nothing but if function. Now what is this if function? When we can use this? Whenever we have any conditions. Okay. Whenever we have one single condition at a time, and whenever we need to check that data whether the condition is matching or not, so we are using if function. So if functions are mostly used to check the conditions. Okay. Next we have and condition. Okay. Now what is this and function is always used to check the data whether we have both the data should be satisfied or not. Okay. Both the conditions should be satisfied or not. Okay. Then only this and function is used. Okay. Or function means was either this or that, either one condition should be satisfied. Okay. So either this condition should be satisfied or that condition should be satisfied. Then we'll give them the value. So whenever we want to satisfy both the condition, we are using and function. Whenever we want to satisfy only one single condition, then we are using or function. Okay. Then next we have not function. Okay. Now what is the use of this not function? So guys, not functions is always used to check the negative values, or as negative condition you can call it as. Okay. Now how to use this not function? I'll tell you when we do the practical stuff. Then we have ifs function. Okay. Now what is this ifs function? If you see here, we have two type of if. First is the if and last is ifs. Now you'll be thinking what is the difference between both? Okay. So if is nothing but it is used to check only for one single condition, and ifs is used to check multiple condition at a time. Okay. Now how to do this practically, I'll tell you. So we'll just move on with the practical work. So let's begin with the practical stuff. So here if you see, this is the data set. Okay. So now in this data set, if you see, this are the data which is related to the salary. Okay. So here if you see, this is the TA column, bonus, incentive, and overtime. Okay. Now let's see, this is the data. Okay. And we need to calculate this TA column, and followed by we need to calculate bonus, we need to calculate incentive, and we need to calculate the overtime. Okay. And they have given some criteria for all these four columns. Okay. So first we'll understand this data. Okay. So this data is based on employee data. Okay. So this random data I have taken, and here if you see, these are the details of employees. This is the address, then cities, region, department, and salaries. Okay. So let's see, there is a task for us that we need to calculate this TA. TA is nothing but traveling allowance. We need to calculate bonus. We need to calculate incentive. We need to calculate the overtime. Now these are the four columns. Okay. Now what we need to do, we need to just check whether
as per the criteria we will get the solution or not. Okay, so one by one we'll see what are the criteria. Okay, so if I scroll at the right hand side, you can see here they have mentioned that TA should be only for marketing employees, and that is nothing but 5,000. Means they have given some criteria. Okay, now what type of criteria they have given? Marketing employees should be 5,000. Means in this data set, if you see, there is a column of department. Okay, here we have marketing data also. Okay, so what we need to do, we need to apply the condition, and as per the condition we need to give the traveling allowance only to those people who are working in marketing department. Okay, now how to do this, I'll tell you. So in this scenario we'll use the if function. Now you'll be thinking, why if? Because we have a condition and we need to check with the solution. The condition is that employee should be from marketing, and if he is from marketing, give them 5,000 rupees or else 0. Now let's move on how to do this value or how to calculate this value. I'll tell you one by one. So there is a rule that whenever you write any formula, always start with is equal to symbol. Okay, and then as I told that for this particular column we are using a function called as if function. So I'll go with if. Okay, now if you see here it is asking give me the logic. Okay, here it is asking give me the logic. So as per the scenario, the logic is that employee should be from marketing department. Okay, so I'll select this department. Okay, is equal to double quotes. Why double quotes? Because we are passing a value. So whenever you're passing any value, always start with double quotes. Okay, then I'll type here marketing. Okay, then double quotes close, comma. Now here if you see, it is asking the syntax. If this condition is satisfied, what should I give the value? Okay, so I'll give here value as 5,000. Okay, if this condition is not matching, then what should I give the value? So by default, as this is a column of numerical, so by default I'll give a 0 value. Okay, then I'll close the bracket and I'll press enter. Now you can see here I'm getting 0. Why 0? Because department is training. Okay, now same formula I'll try to drag for these 3 columns. Now you can see here I'm getting 5,000. How? Because department is marketing, that's why I'm getting 5,000. Okay, now same rule I'll apply to each and every column. So what I'll do, I'll just double click here. Okay, now you can see wherever there is a 5,000, it seems that the department is a marketing. Okay, so in this way you can sort out the things whenever you have the large number of data set, and it is very useful whenever you are working in real world, and also whenever you are working the data set more than 10,000, 5,000 or else 15,000, 1 lakh. At a time you can go with this types of formulas to get the proper solution. Now this was related to the if function. Now we'll move on with the next criteria. So the next criteria is nothing but bonus should be employees working in training and staying in West region, and that should be nothing but 40% of basic salary. Now here is we have 2 conditions at a time. First condition, employees should be working in training department. Okay. Second condition is this, they want to stay in West region. Okay, means we want to satisfy both the condition, and means we want to satisfy training as well as West region, both the things, both the conditions should be satisfied, then only we can get the solution. Okay, now how to find out this, we'll see one by one. Okay, so what I'll do, simply is equal to if. Okay, it is asking give me the logic. Okay, so I'll go with AND function. Why AND function? Because I have 2 criteria at a time, means I need to check 2 conditions at a time. Okay, first is nothing but he should be working in training department and he should be staying in West region. So these 2 are important. Okay, so first I'll start with the department checking. Okay, so what I'll do, simply I'll click this department. Okay, F2 is equal to, I'll give the value as training, comma. Why comma? Because I want to add another logic. Okay, so better to understand what I'll do, I'll just write here in the formula one. Now see here, first condition I've given as a training, then I'll go with the next condition. So region, so I'll select this region is equal to double quotes W. Why W? Because as per criteria that should be West. And why double quotes? Because we are passing a value. So guys, remember, always whenever you're giving any values, always start with double quote symbol in Excel. Then I'll close the bracket. Okay, comma. Now it is asking if this condition match, what is the solution? What output should you get? Okay, so as per the scenario, we need to get 40% of basic salary. Okay, so simply what I'll do, select this basic salary, okay, into 40%.
40%. Then comma. Why comma? Because my value has been done. Okay, now it is asking when this value is false, when this condition is false, what value should you want to display on the screen? So I want to go with 0. Why 0? Because this column is related to the numbers, that's why. And 0 means empty, null. So I'll close the bracket and press enter. Now you can see I'm getting here 800. Why? Because he is from cleaning department and west region, that's why. Okay, so now I'll just double click here. Now you can see everywhere I'm getting the same solutions. Okay, so here also I'm getting 4000. Why? Because he's working in training department and staying in west region, that's why. Okay, so wherever the condition match, at the time only we are getting the 40% of basic salary. Wherever the condition is not matching, it is directly giving 0. So this, for this scenario, we have used if and AND function. Now let's say we'll move on with the next scenario. Okay, so the next scenario is nothing but incentive only for accounts or operations. Okay, and that is nothing but 5000 rupees. Okay, now I'll tell you how to apply this, how to apply the formula for this particular scenario. As I told, they have given the criteria that incentive only for accounts, or means they have used a symbol or operations, and that is nothing but 5000. Okay, now how to apply this, we'll see one by one. So first of all, as I told, whenever you want to apply any formula, always go with is equal to symbol. Okay, so I'll go with is equal to. Okay, and here I'll give the condition if and or. Okay, so here I'll go with if, then or. Now I'll start with the first logic. Okay, so as per the criteria, the first logic is this: department should be accounts. So what I'll do, I'll select this, select department. Okay, is equal to double quotes, I'll go with accounts, comma, once again I'll select this department. Okay, then here I'll go with operation. Now I'll close the bracket. Why? Because my condition is completed, and here I have given OR condition. OR means either this condition is satisfied or that condition should be satisfied. Okay, now if this value match, then I'll give them, let's see, here they have given 5000. So if this condition match, I'll give them 5000 or else 0. Now I'll close the bracket. Now if you see, if I double click here, I'll get the data. How I'm getting? Because here I'm getting 0. Why? Because department is training, that's why. And here I'm getting 5000. Why? Because account is as per the criteria, it is account, so that's why I will give him 5000. Next also, if you see, here is the operation, so that's why it is 5000, and here is the account, so that's why there is a 5000. Means either this condition should be satisfied or that condition should be satisfied. Then we'll give them 5000 or a 0. So in this scenario, we have used OR function. Why OR? Because this or that. Now we'll move on with the last. Okay, so now here if you see, overtime for all employees except accounts and operation, and that is nothing but 3500. Means what they have given the criteria that overtime for all employees except accounts and operation, means except is nothing but is a negative keyword. Okay, so in this scenario we will use a not function, but how to use this, we'll see one by one. So is equal to if, okay, not, and then OR function. Now you'll be thinking why you have taken OR, because accounts or operation we need to check. Okay, either this or that, wherever they'll find account and operation, we'll give him 0, and remaining people will give him 5000 rupees, sorry, 3500 rupees. Okay, now how to give this, we'll see one by one. So first is nothing but I'll select this department. Okay, department is equal to, first I'll go with accounts, comma, once again I'll select this department as equal to, first it should be training or else operation. Now I'll close the bracket. Okay, now once again I'll close the bracket. Why? Because we have used not function, that's why 2 bracket is closed. Okay, now comma, now it is asking if this condition is satisfied, what value should I give? Okay, so what I'll do, I'll use 3500, okay, comma 0. Okay, then I'll close the bracket and press enter. Now you can see wherever I'll find accounts, okay, as well as operation, you can see this they have given 0, and remaining people it is giving 3500 rupees. Okay, so here if you see what the not function has done, it has done the vice versa of this
logic, means it has done opposite, totally opposite of this logic. Okay, so if this logic is, means whenever you're passing any data into not function, it will always do the negative thing or the vice versa of that particular logic which you are adding into not function. Okay, so these are the basic logical functions which are very useful in real world whenever we work on the large number of data set. This type of function and this type of scenarios are coming. Okay, so this was related to the logical functions. Now we'll move on with the next key functions of Excels. Okay, so here is nothing but lookup function, very interesting and very helpful while doing the data analysis, or else if you are working on large number of data set, if you want to do the copy paste. Okay, for that we are using a lookup function. So using this lookup function, whatever you want to do, whatever you want to match the data, at the time lookup function if you are using, then it will be helpful to get the solution or to get the data within a second. Okay, to help to get the data quickly, we are using a lookup functions. Okay, so one by one we'll see a little bit theory part of lookup function. So lookup function in Excel are used to search for a value in a table or a range and return matching information from other column. Okay, the meaning is this: whenever you want to extract the data from one table to another table or one table to another file, okay, we are using a lookup functions. Okay, now how to use this lookup function, I'll also explain you in the data set. I'll do the live perform. I'll just perform the live and I'll tell you how to do this. Okay, they help users quickly retrieve data without manually scanning through large data sets. So whenever you have the large data set, always lookup functions are used. Okay, commonly lookup functions include VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP and index match. Okay, so these are the 4 important lookup functions which are used by the professionals in real world. Okay, so today we'll be just learning of the lookup functions. Okay, now what are the lookup functions, how to use this lookup function, we'll see one by one. Okay, these functions make data analysis faster by connecting related information from different tables. Yes, obviously. So whenever, let's see if you're working with any banking sector or if you're working with any production based companies. Okay, so let's say you have in one single sheet you have data of customers, in another sheets you have a data of balance, and if you want to see which customer has how much of balance, then at that scenario we can use the lookup function to check the data according to the requirements. Okay, now we'll move on with the lookup function. How to use this lookup function, I'll show you with the data set with the live examples. So let's move on with the lookup functions. Now here let's see, this is the data. Okay, here as I told, like this is a basic employee data. Okay, so in this employee data, if you see, these are the 3 columns. Like I'm just taking one example, like this is the entire data set and this is a sample table. Okay, now let's see, from this data set I want to match all this employee name values one by one. Okay, so now how to do this? If you see, right now we can do manually one by one, it is easy. But let's see, if you have the data set of 1000, 10,000, okay, more than 10,000, if you do manually, it will take too much time. Okay, to avoid this, we have one function called as lookup function. Okay, now how to do this, we'll see one by one. Okay, so there are some important things which is important for the lookup function. First is nothing but this column. Okay, this employee name column as well as this employee name column, if you see in both the table is a common. Okay, so there are many lookup functions like lookup, VLOOKUP, XLOOKUP. Okay, so for this, always the rule is that there should be one common column. Okay, if you don't apply any common column, then lookup functions or any another lookup function will be not applied. Okay, so make sure whenever you apply any lookup function, there should be a compulsory common column. Okay, now how to apply this, we'll see one by one. Okay, so the criteria is this: we have a employee name and we need to calculate city. Okay, here is the employee name and here is a city. Okay, so if you do manually, it will take too much time. Okay, to avoid this, what we'll do, we'll apply a formula. So simply is equal to lookup function. Okay, so it is asking give me the lookup value. Okay, it is asking give me the matching value, so I'll select this. Okay, then comma. Now it is asking give me the lookup vector, means where you want to search this value. Okay, so I want to search this value into this table, but in this table on which column you want to search. As this, you can see this is the employee name, so obviously I'll search this values into employee name. So what I'll do, I'll select this entire range. Now after selecting the range, okay, it is asking
what output you want to see. Okay, so as per the scenario, we want to see the city. Okay, so what I'll do, I'll apply the city. So just a minute, I'll give the comma. Now here if you see, I want to apply the city. Okay, means I want to extract the city. So what I'll do, I'll select this entire city column, then I'll close the bracket and I'll press enter. After entering, you can see I'm getting the solutions. Okay, I'm getting the answers. Now here if you see, here it is showing hash NA. Now you'll be thinking, why it is showing hash NA? Because we need to apply the dollar symbol. Why dollar symbol? Because we need to freeze the range. Okay, range should be freeze. Whatever data will select at the time, the range should be freeze. To freeze the cell, we are using the dollar symbol. Now how to apply? If you see, this B2 to B21 is also a range. If you see, if I select click this, okay, now you can see the range is selected. Now I want to freeze this cell. Okay, freeze this entire range. How to freeze? You have to press Ctrl and F4. Okay, if you see in some of the laptops Ctrl F4 is not working, so what you have to do, you have to press Ctrl FN which is there in your laptop, and then press F4. Now you can see this type of symbol is also coming. Okay, now what you have to do, you need to add the dollar symbol. Okay, so to add the dollar symbol, what I'll do, Ctrl N, 1 minute. So I'll select this range. After selecting, I'll press Ctrl F4. Okay, it is not working. So what I'll do, I'll press function plus F4. Okay, now what I'll do, I'll select this range once again. Now Ctrl FN, F4. Now you can see dollar is added. Okay, now here dollar is not added. So what I'll do, I'll add the dollar symbol here. Then I'll add the dollar symbol here also. Then once again I'll add the dollar symbol here. Then followed by here B21. Okay, same dollar symbol I applied here also, dollar, and followed by dollar, here also dollar, and here also dollar. But why we adding this dollar? Because we need to freeze the range. That's why we're adding the dollars. Now as soon as I press enter, you can see if I double click this plus, all the formulas applied, and you can see all the data is matching. Okay, so here if you want to see, you can cross verify. So Anjali Singh is staying in Mumbai city. So here is a Anjali Singh and answer is Mumbai. So this is also matching as well as this is also matching. Means in this way you can apply the lookup function. Okay, now let's see, we'll try with the another column. Okay, so now we need to apply the we need to apply the lookup function on this employee code. Okay, now how to apply? Simply is equal to lookup. Okay, it is asking lookup value, so I'll select this. Okay, comma, now lookup vector. Okay, so what I'll do, I'll select this entire employee name. Why employee name? Because I want to search this employee name in this entire column. That's why. Now what I'll do, I'll give the comma. Okay, now it is asking what is the result, means what is the output. Okay, as I want employee code, so I'll select this entire employee code. Then I'll close the bracket and press enter. Now you can see I've got the employee code. Okay, if you see for the Anjali Singh, the employee code is 1, and here it is also showing the same thing. Okay, but here also we need to add the same thing. We need to add the dollars. So what I'll do, I'll add the dollar here also, then followed by here. Then we'll add the dollar symbol before B also here. Then before 21 also. Same will apply for the another range also. Like before A, we'll apply the dollar. Before 2. Then before A. Once again before 21. Now you can see I got the employee code. So if I double click here, I'll get the entire employee code, and this, using this, we can extract the data. Okay, so lookup functions, if you see here, what we understand that whenever you want to extract the data from two different tables, the first thing is nothing but you should have a common column. Okay, next thing is nothing but you need to know what is the criteria and what are the things which you need to extract. Okay, so whenever you have large number of data set, always go with lookup functions. Now let's see, we'll move on with the next key functions. Okay, so the next key function is nothing but it is a text function. Okay, now what is this text function? We'll see one by one. Okay, so text function is nothing but text function is used to manipulate and clean the data in Excel. Okay, so
whenever you are working with any data set here where you have large number of cleaning, okay, at the time we are using a functions called text function. So in this, mostly used text function are left function, right function, mid function, concatenate and trim function. Okay, so what we'll do this practically, and at the time of practical I'll explain you one by one thing why it is used in real world. So now let's move on with the next concept called text functions in Excel. Okay, so let's see, this is a data. Okay, so let's see, this is a Indian cricket team data. Okay, so now here we need to apply the left function. But what is the use of left function? I'll tell you. Left function is used to extract the data from left hand side. Okay, now here if you see, the data is related to Virat Kohli. Okay, so here left hand side is Virat and Kohli is at the right hand side. Okay, now let's say I want to extract only Virat, means I want to extract only first Virat. Okay, now what I'll do, simply is equal to left function. Okay, then I'll select this. Okay, comma, that is asking number of characters, means if you want to extract Virat, how many characters you want to see, so from the left hand side. So I'll go with 5, I'll close the bracket and press enter. Now you can see I got the data. Here same with the right also. Okay, now let's see what the right function will do. Let's say this is the data. Okay, I want to extract only this Kohli. Okay, for this Kohli, and if you see, it is at the right hand side, not the left hand side. Okay, now if you want to extract only right hand side data, we are using a concept called right. Okay, so is equal to right. Now it is asking from which text you want to extract. So I'll select this cell, then comma, it is asking how many characters you want to extract. So let's say I want to extract 5 characters. So I'll go with 5, then I'll close this bracket and press enter. Now you can see I get left value also, right value also. Okay, now in this we got to know that whenever you want to extract only the left side data, we are using left function. Whenever you want to extract the data from right hand side, we are using right function. Now let's see if you want to extract the middle part. Okay, let's see, you have the data. Okay, from this, let's see, I want to extract only R80. I don't want to extract this entire data. Okay, I want to extract only this R80. Now how to do this? For this we are using a function called mid function. Okay, so mid function are mostly used to extract the middle values. Okay, you can call it as sub value. Okay, now how to extract this, we'll see. So it is asking give me the text. Okay, so I'll select this, comma, it is asking give me the start number. Okay, now if you see, if I want to print R80, so R is at third position. Okay, so here I'll go with third, comma, now it is asking from that position how many characters you want to extract. Okay, so let's see if you apply the logic. If I want to print R80, so obviously it is 3 characters. So here I'll go with 3. Then I'll close the bracket and I'll press enter. Now you can see I got the data. Means here also we can got to know that left function is used to extract the data from left side, right function is used to extract the data from right hand side, mid function is used to extract the data from middle part of the particular text or a data you can call. So this, here we understand all these things. Okay, now we'll move on with the next concept called concatenate, very interesting in real world. Okay, now let's see, I'll just scroll, we'll move on to the next part, concatenate. Okay, previously in the old Excel, okay, the formula was concatenate. Okay, now in the new Excel the formula is concat function. Okay, now in the new Excel the formula is concat function. Okay, now how to do this, we'll see one by one. The meaning of both the function is same, only the name is different. Okay, so but why we are using this, I'll explain you. Let's see, you have a data of first name, you have a data of last name. Okay, and there is a scenario that we need to extract the data, like we need to add this to data into one single row or one single column. Okay, now how to add this? Simple, is equal to concat function. Okay, it is asking give me the first text. Okay, so I'll select this. Okay, then comma, I'll select this. Now if I close the bracket and if I press enter, you can see I'm getting the data of two different column into one single column. Okay, now here if you see, if you observe, there is no any space between two different values. Okay, it is combined, but I want space. Now what I'll do, simply I'll close this. Okay, double quotes, give the space, once again double close. Okay, comma, then select this cell, close the bracket. Now you can see I get the entire data with the proper space.
Okay, same thing I can apply to each and every data. So what I'll do, I'll just double click here. Now you can see each and every data is there with the same rule which we apply to the first single cell. So simple concat functions are used to connect two different data into one single cell. Okay, now we'll move on with the next function called trim function. Okay, but before moving with next function, one thing I need to tell you. Concat functions are mostly used in real world whenever you are working with banking sector, when you are working with production based companies. Okay, so I'll give one real example of concat function. Okay, whenever you are working with any banking sector, at the time there is a task or there is a criteria that for every mobile number you need to add +91. Okay, because this is the proper format of adding the mobile number. Okay, so if you want to add this, for this we are using a function called concat function. So using concat function we can add +91 to each and every mobile number, and it will be very easy. If you do manually it will take too much time. Okay, so within formula it will be very easy to do this kind of scenarios. Now we'll move on with the next function called as trim function. So this function is also used for data cleaning. Okay, so now we'll learn about the trim function. So here if you see, this is nothing but this is Indian cricket team data. Okay, and here let's see we have a data like here if you observe properly, all the data is having lot number of space which is called as white space. Okay, there are lots number of white spaces here. Now let's see, I want to remove this white space. Okay, to remove the white space we have one function called as trim function. Okay, so how to use this? Simply is equal to trim function, is equal to trim function, then it is asking give me the text. So I'll select this, close the bracket and press enter. You can see now all the space has been removed. So if you observe carefully here, there was lots of number of space between Virat and Kohli. Okay, so if you want I'll just show you here also. Now you can see between Virat and Kohli there is almost 7 to 8 spaces. Okay, so to remove this within one click we are using a formula called trim function. So trim function is used to remove the trim function is used to remove the extra spaces. Now this was related to the text function. Now we'll move on with another key functions of Excel. Okay, so that is related to the that is related to the date and time functions. Okay, now what are these date and time function? We'll see one by one. Now date and time function, Excel date and time function allow users to automate time based calculations. So whenever you are working with any data set where you have the date related data or as time related data, at a time this 4 to 5 functions are very helpful to get the data or to get the task complete as soon as possible. Okay, so what are the types of date functions which are used mostly in the real world? So we'll see one by one. So first is today function, second is now function, third is date diff function, fourth is EO month. EO means end of the month. Okay, now we'll move on with the first function. Now today function. So today function is mostly used to display current date. Okay, now function is used to display current date plus time. Okay, date diff function is used to calculate the duration, whether it is a month, whether it is a year, whether it's a days. Okay, what type of duration? Between 2 days. Okay, like start date and end date. Okay, EO month function is used to extract the end of the month date for a specific month. Okay, now how to do this? We'll see one by one. Let's start with the date functions. So this is the date functions. Okay, now let's see there are some criteria. Okay, what type of criteria? So let's say you are working with any data. Okay, at that time they have told that you want to display current time and date. Okay, but every day you are coming to the office and then you are giving the shortcuts. Okay, आप क्या कर रहे हो? Shortcut दे रहे हो, ठीक है? Shortcut से भी आप date और time निकाल सकते हो. Okay, और formula से भी निकाल सकते हो. The reason is this कि like अगर आप शॉर्टकट से करोगे, ओके, इट विल बी वर्किंग एज स्टैटिक डेटा. ओके, बट अगर आप फॉर्मूला से करोगे इट विल वर्क एज अ डायनेमिक डेटा. अभी स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है? स्टैटिक मतलब जो वैल्यू फिक्स रहता है. लाइक बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इज नथिंग बट पाई, द वैल्यू ऑफ पाई, ओके, विच इज 3.14. ओके, वो वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका टाइम, ठीक है, और डेट. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायनेमिक डेटा. ठीक है, अभी डायनेमिक डेटा क्या होता है? जो डेटा हमेशा चेंज होता है, एज पर सिनेरियो चेंज होता है. तो उसका भी एक बेस्ट एग्जांपल आई टेल यू द टेम्परेचर.
ओके जो टेम्परेचर रहता है वो हमेशा चेंज रहता है, सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक डेटा। तो वैल्यू जो भी फिक्स रहता है उसको दैट इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा। ओके सो नाउ वो भी सिनेरियो अभी हम यहाँ पे लेके आएंगे एक्सेल में, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस इज द करंट डेट। अभी अगर मान लो मुझे डेट डिस्प्ले करना है और वो हर रोज चेंज होना चाहिए, ओके सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल यूज अ फंक्शन कॉल्ड टुडे, सो इज इक्वल टू टुडे, ओके देन आई सिंपली क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। अभी यहाँ पे चेक करो, ये मुझे करंट डेट बता रहा है, ओके सो करंट डेट जो है 8 दिसंबर 2025, ये हो गया मेरा करंट डेट। मान लो मुझे डेट भी डिस्प्ले करना है, उसके साथ टाइम भी डिस्प्ले करना है। फॉर दिस व्हाट विल डू, विल यूज अ नाउ फंक्शन। ओके नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट के साथ टाइम भी डिस्प्ले करता है। तो अभी का जो टाइम है प्लस डेट दोनों आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये डायनेमिक डेट है, मतलब अगर आप कल फिर से आप ये फाइल ओपन करोगे तो फिर से डेट और टाइम चेंज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये चेंज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ये डेट और टाइम जो है वो फॉर्मूला से एक्सट्रैक्ट किया है, ना कोई आपने यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया है, ठीक है। सो टुडे फंक्शन क्या करता है, डेट डिस्प्ले करता है। नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट विद टाइम डिस्प्ले करता है। ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट। ओके सो ये हो गया आपका टुडे और नाउ फंक्शन। ओके नेक्स्ट है आपका डेट, ठीक है, डेट डिफ फंक्शन। अभी ये डेट डिफ फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, विल सी। अभी मान लो चलो यहाँ पे 15/8/1947, तो उस दिन हमारा क्या हुआ था, दैट वाज अ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। सो वहाँ से लेके अब तक हमें डेज कैलकुलेट करना है। ओके फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे टू टिल नाउ हाउ मेनी डेज हैज़ बीन कंप्लीटेड और हाउ मेनी मंथ्स और हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। ये तीन चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे डेट डिफ फंक्शन, ठीक है। अभी डेट डिफ फंक्शन कैसे काम होता है, नाउ सी हियर, सिंपली इज इक्वल टू, हाँ और एक चीज़, अब ये जो डेट डिफ फंक्शन होता है दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज मैजिकल फंक्शन और एज यू कैन कॉल्ड एज इनविजिबल फंक्शन विच इज देयर इन एक्सेल। अभी यू विल बी थिंकिंग कि ये इनविजिबल कैसे हुआ, क्योंकि आप कौन सा भी फंक्शन टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, नेम मतलब लिस्ट ऑफ द फंक्शंस दिखता है, ठीक है। यू आर एबल टू सी द लिस्ट, ओके। बट इफ यू सी, इफ आई टाइप हियर डेट एंड देन डिफ, तो यहाँ पे मुझे कोई फंक्शन दिख ही नहीं रहा, या फिर ना मुझे यहाँ पे कुछ लिस्ट दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको इसको एक्टिव करना है कंपल्सरी यू टू ऐड ब्रैकेट। तो आप जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे, नाउ यू कैन सी इट हैज स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग, ये अभी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी इसका जो भी सिंटैक्स रहता है तो क्या होता है, पहले गिव द स्टार्ट डेट, तो ये हमारा स्टार्ट डेट है, ठीक है, कॉमा एंड डेट क्या है, टुडेज डेट, सो विल सिलेक्ट दिस टुडेज डेट, ओके। उसके बाद हमें पास करना है, हमें क्या चाहिए, ऑन टू डिस्प्ले मंथ, हमें ईयर डिस्प्ले करना है या फिर डेज डिस्प्ले करना है, ओके। सो लेट्स से हमें ईयर डिस्प्ले करना है, मतलब 1947 से ये साल में कितना हमें 19 मतलब इंडिपेंडेंस डे से लेके अब तक कितने साल हो गए, वी नीड टू कैलकुलेट। सो हियर आई विल गो विथ ईयर, डबल कोट्स वाई, डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो नाउ यू कैन सी इट इज़ गिविंग 78, मतलब इंडिपेंडेंस डे से लेके अभी तक आपके 78 ईयर्स हो गए, ओके। सेम अगर मुझे मंथ भी चाहिए, ओके, सो हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे, जहाँ पे ईयर है सिर्फ हम लोग वो ईयर हटा के यहाँ पे मंथ ऐड करेंगे, और जैसे मैं एंटर करूँगा यू कैन सी ये आ गया मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर दिस एंटायर ईयर्स। अगर मान लो मुझे डेज चाहिए कि कितने डेज हो गए, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आई रिमूव दिस एम एंड देन ऐड दिस डी, एल प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमें अभी डेट दिखाई दे रहा है कि हमें ऑलमोस्ट 28,605 डेज हुआ फॉर आर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन यूज द डेट डिफ फंक्शन। सो वेरी इंटरेस्टिंग, दिस ऑल्सो इज वेरी इंटरेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड। अभी मैं आपको एक रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप कोई लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको एक कुछ टास्क है कि लाइक वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज विच ऑर्डर हैज़ बीन परचेस्ड, ओके। तो एक पर्टिकुलर कस्टमर ने ऑर्डर कब किया और वो ऑर्डर कब डिलीवर हुआ, उसमें कितने डेज लगे, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तब वी कैन यूज दिस डेट डिफ फंक्शन। सो स्टार्ट डेट रहेगा हमारा ऑर्डर डेट, ओके, डिलीवर डेट रहेगा हमारा एंड डेट। तो वो डेट यूज़ करके हम लोग डेज निकाल सकते कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर होने में कितना दिन लगे हमें, ओके। सो फॉर दिस वी आर यूजिंग डेट डिफ फंक्शन। सो नाउ दिस वाज द रिलेटेड टू द डेट डिफ। अभी हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ईओ मंथ। अभी ईओ का फुल फॉर्म क्या है, एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ टास्क दिया है, कुछ सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है। क्या सिनेरियो, विल सी वन बाय वन। सम इज सेम मंथ। अभी पहला क्या है, सेम मंथ। अगर मुझे
सेम मंथ का एंड ऑफ द डे देखना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज इक्वल टू एंड ऑफ मंथ फॉर्मूला। अब ये पूछ रहा है गिव मी द स्टार्ट डेट, ठीक है। अभी आज का डेट है तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेट दिया आज का, सो आई विल सिलेक्ट दिस, ठीक है, कॉमा। अब ये पूछ रहा है मंथ्स, मतलब कौन से मंथ का देखना है, अभी मुझे करंट मंथ का देखना है, सो आई विल गो विद 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। नाउ यू कैन सी अभी ये जो वैल्यू दे रहा है मुझे नंबर्स में दे रहा है, बट तो मुझे तो डेट में चाहिए, ये नंबर्स क्यों दे रहा है। आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, क्या, सिंपली इफ यू सी सबसे ऊपर यहाँ पे जनरल का टैब है, ओके, सो आई क्लिक दिस जनरल, यहाँ पे आई सिलेक्ट दिस ऑप्शन शॉर्ट डेट, ठीक है। तो आप चेक करो तो यहाँ पे डेट आ गया, सो दिस इज द एंड डेट ऑफ दिस मंथ, ठीक है। सो सेम हमें क्या करना है, सिलेक्ट दिस ऑल द रोज, सो फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन आई सिलेक्ट शॉर्ट डेट, ठीक है। ये हमने पहले इसको सेटिंग किया ताकि बाद में फिर से इशू ना आए। अभी नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, उन्होंने क्या बोला है, गिव मी द नेक्स्ट मंथ एंड डेट। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ का एंड डेट निकालना है। सो सिंपली व्हाट आई विल डू इज इक्वल टू EO मंथ, ठीक है। स्टार्ट डेट जो है ये हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ पूछ रहा है, ओके, सो आई वांट टू सी द नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ आएगा 1, ठीक है। सो आई क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी 31/1/2026, ये उसने क्या किया, नेक्स्ट मंथ का एंड डेट दिया, ठीक है। आएगा अभी नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया नथिंग बट प्रीवियस मंथ, ओके। अगर मान लो आपका जो करंट मंथ चल रहा है उसका प्रीवियस मंथ का एंड ऑफ द मंथ डेट जानना है आपको, सो व्हाट आई विल डू इज इक्वल टू EO मंथ, ओके, स्टार्ट डेट, सो टुडेज डेट, ओके, कॉमा, मंथ पूछ रहा है, सो आई गो विथ -1, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी दिस इज द प्रीवियस मंथ। नाउ विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट। अभी ये पूछ रहा है करंट मंथ डायनेमिक, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो डेटा हर रोज चेंज होता है, ओके। सो व्हाट आई विल डू सिंपली इज इक्वल टू करंट मंथ, सॉरी इज इक्वल टू EO मंथ। अब ये पूछ रहा है स्टार्ट डेट, सो आई यूज टुडे फंक्शन, क्यों, क्योंकि टुडे फंक्शन क्या होता है, हर रोज चेंज होता है, तो जैसे मेरा हर रोज डेट चेंज होगा ये वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो करंट मंथ हमें चाहिए, सो आई विल गो विद 0, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। अभी चेक करो 31/12/2025, मतलब आज का ये मंथ का लास्ट डेट हमें मिल गया, ठीक है। नाउ 6 मंथ्स लेटर, अगर मान लो आपको 6 मंथ्स लेटर का जो भी लास्ट डेट है वो आपको चाहिए, सो हाउ टू डू, सिंपली डू द सेम स्टेप, EO मंथ, ठीक है, स्टार्ट डेट, सो दिस इज द स्टार्ट डेट, ओके, कॉमा, मंथ पूछ रहा है, सो आई विल गो विथ 6, वाई 6, बिकॉज हमें करंट मंथ से 6 मंथ के आगे का लास्ट डेट चाहिए, सो आई विल गो विथ 6 एंड एज सून एज आई प्रेस एंटर यू कैन सी हमें 6 मंथ का लास्ट डेट मिल गया, मतलब ये हो गया आपका जून मंथ का लास्ट डेट। सो EO मंथ इज यूज टू कैलकुलेट द लास्ट डेट ऑफ अ स्पेसिफिक मंथ, ओके। सो ये सारे डेट एंड टाइप फंक्शन यूज होता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। ये EO मंथ कब यूज होगा, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एनी मंथली रिपोर्ट्स, ओके, मंथली डैशबोर्ड जब कब काम कर रहे हो उसके ऊपर, तब आप EO मंथ करके जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगा आपके 4 की फंक्शन विच आर यूज्ड इन रियल वर्ल्ड एंड विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द एक्सेल, ओके। नाउ विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट। नाउ विल सी द पे स्पेशल्स, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, पे स्पेशल कंडीशंस एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है। अभी पे स्पेशल क्या होता है, आई टेल यू, ओके। सो पे स्पेशल्स आर नथिंग बट पे स्पेशल प्रोवाइड्स एडवांस कंट्रोल when copying, pasting data, enables selective pasting, okay, perform mathematical operation during paste, okay, transport data and maintain links between the sheets, ठीक है। अभी पे स्पेशल जो मेथड है उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको डेटा जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा या फिर अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो उसमें भी अगर फॉर्मूला के साथ अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो क्या होता है, दूसरे जगह पे अगर आप पेस्ट करोगे तो वहाँ पे कभी कभी वैल्यू एरर आता है, ठीक है। सो इन दिस सिनेरियो वी कैन यूज द पे स्पेशल। नाउ हाउ टू यूज दिस पे स्पेशल, आई टेल यू, ठीक है। विल मूव ऑन विद द डेटा सेट। लेट्स सी दिस इज द डेटा, ओके, एंड हियर वी हैव ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। ये अभी हमें 4 ऑपरेशंस करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और सारे कॉलम पे पेस्ट कर देंगे। नाउ व्हाट विल डू, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा हमने पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे भी एक वैल्यू है और यहाँ पे भी एक वैल्यू है, ठीक है। अभी इसका पे स्पेशल के साथ क्या संबंध, ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये वैल्यू अगर मान लो ये वैल्यू आपकी, ठीक है, तो ये वैल्यू का आपको क्या करना है, ये सारे वैल्यूज़ को ऐड करना है विद इन यूजिंग दिस वन वैल्यू, यू नीड टू ऐड ऑल दिस वैल्यूज 1 by 1।
अगर आप 1 बाय 1 करोगे तो इसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सो विद इन 1 सेकेंड आपको इसको कैसे करना है आई टेल यू। सबसे पहले हम लोग ये कॉपी करेंगे, ठीक है। देन आई सेलेक्ट दिस एंटायर डेटा, ठीक है। देन आई गो विद दिस ड्रॉप डाउन। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे होम टैब में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा आपका पेज स्पेशल। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करूँगा मैं, ओके पे क्लिक करूँगा। नाउ वी कैन सी पहली वैल्यू 55 थी, अभी हो गया 65। कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट है 61, अभी 71। क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज ऑफ दिस, ओके। सेम थिंग वी कैन डू फॉर दिस सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कैसे? ध्यान से देखो। नाउ लेट्स सी इफ आई सिलेक्ट दिस डेटा। अभी मान लो मुझे इसको सब्सट्रैक्ट करना है, सो आई कॉपी दिस, ठीक है। आई सिलेक्ट दिस एंटायर डेटा। उसके बाद फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन आई गो विद दिस पेज स्पेशल्स, ठीक है। एंड हियर आई सिलेक्ट दिस सब्सट्रैक्ट एंड प्रेस ओके। बट बिफोर दिस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं अभी इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा विद द वैल्यू 10, तो यहाँ पे आंसर 45 आना चाहिए, यहाँ पे 51 आना चाहिए, यहाँ पे 50 आना चाहिए, यहाँ पे 62 आना चाहिए। मतलब ऐसे हम लोग आना चाहिए, ओके। नाउ लेट्स सी दिस वैल्यूज आर कमिंग और नॉट। तो जैसे मैं अभी ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया अभी 45, यहाँ पे 51, 50, 62। मीन्स क्या हुआ? ये जो वैल्यू है सारे वैल्यूज़ के साथ माइनस हुआ है, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका बेसिक पेज स्पेशल ऑपरेशंस, ठीक है। तो दिस पेज स्पेशल ऑपरेशंस आर वेरी हेल्पफुल इन रियल वर्ल्ड। अगर आप कोई बड़ा डेटा का, अगर आप सिंगल वैल्यू के साथ अगर आपको मल्टीपल ऑपरेशंस करना होगा, देन वी आर यूजिंग दिस पेज स्पेशल ऑपरेशंस, ठीक है। सो नाउ विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नाउ व्हाट इज दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग? ओके, so conditional formatting is a special formatting that Excel applies to a cells that satisfies some condition, which Excel a rule that satisfies some condition, okay, which Excel calls a rule. If the condition is true, the cell range is formatted based on that condition. If the condition is false, the cell range is not formatted based on that condition. तो मीनिंग ये है कि आप अगर जो भी कंडीशन दोगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपका डेटा जो है फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट का मीनिंग क्या है? उसको अपन रूल लगाएंगे, उसके हिसाब से आपका डेटा जो है चेंज होगा। अभी ये कैसे करना है, क्या करना है, आई टेल यू वन बाय वन, ओके। नाउ लेट्स सी दिस इज द डेटा, ठीक है। सो दिस इज द डेटा। अभी यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन है? इफ़ यू सी दिस इज अ एम्प्लॉय डेटा, ये आपका एक एम्प्लॉय डेटा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सैलरीज है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके ऊपर एक रूल लगाएंगे। क्या रूल है? आई टेल यू। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब भी आप लगाते हो तो मेक श्योर आपने वही कॉलम सिलेक्टेड किया होगा। सो आई सिलेक्ट दिस कॉलम, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक रेंज सिलेक्ट करते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद आई विल गो विद दिस ऑप्शन कॉल्ड हाईलाइट सेल रूल्स, ओके। तो अभी लेट्स सी आई विल गो विद दिस ऑप्शन कॉल्ड ग्रेटर देन, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? सो व्हाट आई डू, आई ऐड द वैल्यू एज 12,000, ठीक है। अगर अब चेक करो ठीक से, जैसे मैंने यहाँ पे 12,000 वैल्यू ऐड किया, यहाँ पे देखो बहुत सारे वैल्यूज हाईलाइट हुए, मतलब जो भी वैल्यू सेटिस्फाइड हुई वही हाईलाइट हुआ है, ठीक है। सो हमने क्या कंडीशन दिया था? हाईलाइट ओनली दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 12,000। तो जैसे मैं अभी ओके पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी ये जो कलर्स है बाई डिफॉल्ट यहाँ पे पिंक कलर आया और उसने वही वैल्यू हाईलाइट किया जो 12,000 से ग्रेटर है, ठीक है। अगर मुझे ये रूल हटाना होगा, ओके, सो व्हाट आई डू, फिर सिंपली सिलेक्ट द सेम रेंज। ये ड्रॉप डाउन पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखो क्लियर रूल, आई सिलेक्ट दिस क्लियर फॉर अ सिंगल शीट, ठीक है। अभी चेक करो आपको पूरा जो रूल जो भी हमने अप्लाई किया था वो एक ही क्लिक में निकल गया, ओके। नाउ वंस अगेन इफ यू सी वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला, अगर मुझे फिर से एक बार यहाँ पे लगाना, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी दूसरा कुछ नया सीखते हैं। क्या करते हैं? आई सिलेक्ट दिस एंटायर रेंज, आई विल गो विद दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, हाईलाइट, ओके, लेस देन। अभी हम लोग लेस देन देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि 10,000, ठीक है, या फिर लेट्स सी विल टेक 8,000। सो 8,000 के नीचे जितने भी सैलरीज है दैट आई वांट टू हाईलाइट, ठीक है। 8,000 के नीचे जितने भी सैलरी है वो मुझे हाईलाइट करना है। और एक चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट पिंक कलर आ रहा है, ओके, बट आई डोंट वांट दिस पिंक, मुझे कुछ तो मेरा खुद के कलर्स चाहिए, ओके। सो व्हाट आई डू, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे कस्टम फॉर्मेट है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे फिल लेंगे, तो लेट्स से मुझे ब्लू कलर चाहिए, सो आई सिलेक्ट दिस ब्लू, ओके। देन आई विल गो विद दिस फॉन्ट। अगर आपको बोल्ड चाहिए तो आप बोल्ड ले लो, ओके। उसके बाद ओके पे क्लिक करो एंड जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप चेक करो जो भी डेटा हमने ब्लू में सिलेक्ट किया था वो सारा हाईलाइट हुआ है,
ठीक है, और एल्स आप इसमें कुछ अलग भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो. सो लेट्स से आई गो विद दिस ग्रेटर देन, यहाँ पे आई गो विद 8000. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस आई गो विद कस्टम फॉर्मेट, लास्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं येलो कलर. ओके, फॉन्ट, देन बोल्ड. ओके, आई प्रेस ओके एंड आई प्रेस ओके. अभी चेक करो, पहला यहाँ पे आ रहा था कलर इन पिंक, नाउ इट इज कमिंग येलो. व्हाई? बिकॉज हमने हमारे हिसाब से डेटा ऐड किया, इसलिए यहाँ पे येलो आया. ओके, सो दैट इन दिस वे वी कैन अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ठीक है, अगर मान लो मुझे ये हटाना होगा, ठीक है, जो भी रेंज है या फिर जो भी रूल है मुझे हटाना है, सो आई क्लिक दिस ड्रॉप डाउन, सिलेक्ट द रेंज. फ्रॉम हियर आई सिलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन. अब चेक करो, पूरा जो भी रूल है वो निकल गया. ठीक है, नाउ विल मूव ऑन विद द लास्ट फंक्शन, और एज लास्ट वी कैन कॉल्ड एज सिनेरियो और की फंक्शंस. ओके, सो दैट इज नथिंग बट प्रोटेक्टिंग अ शीट. ठीक है, अभी कैसे हम लोग शीट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, विल सी. ओके, अभी शीट प्रोटेक्ट करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, उसका यूज़ क्या है, विल सी वन बाय वन. ओके, सो प्रोटेक्ट शीट करने से देयर शुड बी एक्सीडेंटल डेटा मॉडिफिकेशन. यस, क्योंकि अगर आपने शीट प्रोटेक्ट किया, ओके, अगर वो शीट किसी और को आपको भेजना है, लाइक योर टीममेट्स और योर क्लाइंट्स, ओके, अगर गलती से उन्होंने कुछ चेंजेस किया तो वो भी इफेक्ट पड़ेगा. अगर वो चेंजेस आपको अवॉइड करना है, देन वी आर यूजिंग अ प्रोटेक्ट शीट ऑप्शंस. ओके, वो कैसे करना है, क्या करना है, विल सी. ओके, नाउ लेट्स सी, दिस इज अ एक्सेल फाइल. ठीक है, ये आपका एक एक्सेल फाइल है. ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा कुछ डेटा है, यहाँ पे लेट्स गो विद एडवांस एक्सेल. ठीक है, ये आपका डेटा है, एक आपका सिक्योरिटी डेटा है. ठीक है, इसमें वेन एवर आई शेयर दिस फाइल टू एनीवन, ठीक है, ये फाइल मैं जब भी किसी को भेजूंगा, ठीक है, एट द टाइम उसने कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं करना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विल ऐड द प्रोटेक्शन. ओके, हाउ? सिंपली राइट क्लिक. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट. इफ आई क्लिक हियर इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड. ओके, सो व्हाट आई डू, सिंपली गिव द पासवर्ड 1 2 3. तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये सारे ऑप्शन है, तो आपको एज पर रिक्वायरमेंट आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो. तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 ही होता है, बट आप अगर आप चाहिए तो आप सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, उस टाइप की सिक्योरिटी लगेगी दिस पर्टिकुलर शीट पे. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन. अब जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ठीक है, अभी ये फिर से पूछ रहा है गिव मी द पासवर्ड. सो 1 2 3. नाउ यू कैन सी, अब ये जो फाइल है हमने इसको पासवर्ड लगा दिया. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ, इट इज़ गिविंग वन एरर, और एज यू कैन कॉल इट इज गिविंग वन वार्निंग. व्हाट टाइप ऑफ वार्निंग? द सेल और द चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज अ प्रोटेक्टेड शीट. ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो उसको पहले अनप्रोटेक्ट करना होगा. ठीक है, अभी अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं, सिंपली राइट क्लिक. ओके, अनप्रोटेक्ट शीट. ओके, सो सेम पासवर्ड 1 2 3 एंड प्रेस एंटर. नाउ यू कैन सी, इफ यू टाइप हियर एनीथिंग, ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा. पहले हमें नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड था. ओके, सो इन दिस वे दिस आर द थिंग्स विच वी हैव लर्न टुडे. ओके, तो ये हो गया आपका फाइल प्रोटेक्शन. ओके, सो और भी बहुत सारी चीज़ें विच विल बी लर्निंग इन द फ्यूचर एज पर दिस सेशन. इफ़ यू सी, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखे. यहाँ पे वील सी वी हैव लर्न अबाउट द लॉजिकल फंक्शंस, उसके बाद हमने सीखा टेक्स्ट फंक्शंस, उसके बाद हमने सीखा पेज स्पेशल ऑपरेशंस, उसके बाद हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन प्रोटेक्टिंग अ शीट. ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन वी लर्न अबाउट द पावर BI, व्हाट इज यूजफुल इन पावर BI, why it is used by real world people, why the professionals are using Power BI. All these things we'll learn in the next session. Okay, so till the time, thanks for joining everyone. Bye bye, have a nice day, take care, we'll meet in the next video.